ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਆਚਰਜ ਸੋਭਾ ਕਾਰਜ ਆਇਆ ਰਾਸੇ, ਕਾਰਜ ਆਇਆ ਰਾਸੇ। ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਆਚਰਜ ਸੋਭਾ ਕਾਰਜ ਆਇਆ ਰਾਸੇ, ਕਾਰਜ ਆਇਆ ਰਾਸੇ। ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਆਚਰਜ ਸੋਭਾ ਕਾਰਜ ਆਇਆ ਰਾਸੇ। ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਆਚਰਜ ਸੋਭਾ ਕਾਰਜ ਆਇਆ ਰਾਸੇ, ਕਾਰਜ ਆਇਆ ਰਾਸੇ। ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਆਚਰਜ ਸੋਭਾ ਕਾਰਜ ਆਇਆ ਰਾਸੇ, ਕਾਰਜ ਆਇਆ ਰਾਸੇ। ਨਾਨਕ ਕੋ ਪੂਰਾ ਭੇਟਿਓ, ਨਾਨਕ ਕੋ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਭੇਟਿਓ, ਨਾਨਕ ਕੋ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਭੇਟਿਓ, ਨਾਨਕ ਕੋ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਭੇਟਿਓ। ਸਗਲੇ ਦੁਖ ਵਿਨਾਸੇ ਕਰ ਆਨੰਦ ਹਮਾਰੇ, 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 ਕਰ ਆਨੰਦ ਹਮਾਰੇ। ਆਗੇ ਸੁਖ ਪਾਛੈ ਸੁਖ ਸਹਿਜਾ, ਆਗੇ ਸੁਖ ਪਾਛੈ ਸੁਖ ਸਹਿਜਾ, ਆਗੇ ਸੁਖ ਪਾਛੈ ਸੁਖ ਸਹਿਜਾ, ਆਗੇ ਸੁਖ ਪਾਛੈ ਸੁਖ ਸਹਿਜਾ। ਕਰ ਆਨੰਦ ਹਮਾਰੇ, 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 ਕਰ ਆਨੰਦ ਹਮਾਰੇ। ਕਰ ਸੁਖ ਵਸਿਆ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਕਰ ਸੁਖ ਵਸਿਆ
आनंद हमारा, कर 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 आनंद हमारा। जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरुजी सदा नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। नमः शिवाय। शिव जी सदा नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरुजी सदा नमः शिवाय। शिव जी सदा
शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी की। ओम जय शिव ओंकारा प्रभु हरि शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। ओम जय शिव ओंकारा प्रभु हरि शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे स्वामी पंचानन राजे हंसानन गरुडासन हंसानन गरुडासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चारु चतुर्भुज दश भुज ते सोहे स्वामी दश भुज ते सोहे। तीनों रूप निरखता तीनों रूप निरखता त्रिभुवन मन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। यक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी स्वामी मुंडमाला धारी। चंदन मृग मद चंदा चंदन मृग मद चंदा भोले शुभकारी। ओम जय शिव
ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਤਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। कलयुग का धर्म कहो तुम ताई, किव छूटे हम छुटका की। हर हर जप बेड़ी हर तूला, हर जापो तेरी तरे तैराकी। हर जी लाज रखो हर जन की, हर हर जन जपो जपावो। अपना हम मागी भगत एकाकी रहाओ। व्याख्या। हे भाई, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਧਰਮ ਦੱਸ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਝਮੇਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਝਮੇਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਂ? ਉੱਤਰ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਪ ਬੇੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਮ ਹੀ ਤੁਲਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਹਰ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਉਹ ਤਾਰੂ ਬਣ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। हे ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਝਮੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾ ਲੈ। हे ਹਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਸਿਰਫ ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਦਾਨ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਰਹਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਅਗਨ ਸਾਗਰ ਬੂढ़त ਸੰਸਾਰਾ, नानक बाह पकड़ सतगुर निस्तारा। कि पूरी दुनिया जो है वो अग्नि में जल रही है और गुरु हमारी बाह पकड़ के हमें बाहर निकालते हैं। तो उस परमात्मा को हमेशा याद रखो, वो ही आपको लेकर जाता है। और हम कितने कितने ब्लेस्ड हैं कि गुरु जी महाराज ने हमें अपना नाम दिया है और उनकी वड्याई सुनने के लिए हमारे अंदर आनंद छा जाता है। जैसे शब्द में भी था, कर आनंद हमारे। तो हम उनकी वड्याई सुनने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं अनीता कुमार आंटी को। विद bowed head and folded hands, I request her to please share her satsang and journey with Guruji. Welcome, Aunty, and over to you. Thank you, Jai Guruji. Thank you for having me here. So, can you hear me? Sorry, am I audible? Yes, you are. Thank you. Jai Guruji. So, would you like me to share from the beginning? How would you like me to share? Aunty, as Guruji guides you, from the beginning would be wonderful, but as he guides you. Okay, so here goes. From the beginning, with Guruji's grace. Thank you, Guruji. Thank you, Sangat Ji. So, I was born and raised in England, and I was born with asthma and a hole in the heart and eczema. And then I moved to Delhi in 88, moved to India rather in 88. And on coming to India, my health issues were aggravated, and they precipitated to another level where every changing season I was hospitalized for asthma because it was completely life-threatening. And my skin also kind of, the flare up was on a different level of suffering. And generally the overall health, my mental, emotional, physical health completely deteriorated. I was very disturbed mentally. I think it was a culture shock coming to India. And, my personal life also kind of, got me into a space of dejection and despondency. So there was a lot of darkness around me. I would say a lot of dejection and dismay and despair. I was all of 22. So life really wasn't what I had imagined it to be as a teenager. And when the cloud descended me, I didn't know who to turn to. So I went to many Babas and Gurus and Pandits looking for answers because life just did not add up for me. Nothing made sense. And a 22-year-old is, kind of very young. And, but at a very young age, I would say, I was disillusioned with life. And then my journey of seeking the truth from various sources continued. And then there came a point in my life I stopped going to these Pandits and Gurus and Babas because I realized it's all very commercial and I'm not interested. There's a lot of, falsehood there because each one of them would promise me a cure or remedy for my suffering.
but nothing changed, nothing moved. The needle remained exactly where it was, and life stagnated. So I just decided in my head that I'm never going to go to any Pandit or Guru and Baba. And meanwhile, my journey of going to, the hospital every changing season and being in the ICU and being on steroid injections and tablets continued. Then in 97, one Sangat, she's a very devout and steadfast Guru Sangat. She keeps a very low profile. She's a genuine Sangat, as in, obviously Sangat to sab genuine hai, but everyone's in different levels. And she just said, "Tu mere Guruji ke paas chal." This is Bambi Singh Aunty. And she said, "Tu mere Guruji ke paas chal." Guruji is here from Punjab. And I want you to just, take his blessings. So you can imagine my response. She kept insisting, I kept resisting. And this happened for a few weeks. Finally, I gave in and I said, "Okay, I'll go." She said, "Go with an open mind, open heart." I went, I did the exact opposite. I went with a closed mind, closed heart. And in the car, she was telling me bits and pieces about Guruji, his grace on her family, her life. And I wasn't even listening. It was almost like a deaf ear. I was staring out the window and I couldn't wait to get this over and done with. And then we reached Chota Mandir, as we know it today. And Guruji was sitting on his gaddi. Clearly, she had informed Guruji. It was Thursday evening, 6 o'clock. And she had informed Guruji that she's getting me. And as I walked into Chota Mandir and as I bowed to him, he was very informal, sitting in his shorts, t-shirt, trainers. And he was very informal, very approachable. He was very loving, all embracing. And he just looked at me. I just bowed. And as I bowed, I got this fragrance and overwhelming fragrance, all embracing fragrance, I should say it, and an awakening. As I bowed, I just said, "My God, I feel like I found my home." I felt at peace. There was an instant calmness in me. That turbulence of many decades of my life suddenly morphed into calmness, just in that one moment. So he just looked at me. He said, "Tu roz aaya kar. Tu roz langar kitta kar." I was thrilled to bits because Bambi has said to me, "I've taken so many of my friends, but none of them have ever gone back. You may be one of them." And then he just said, "Tu aaj chai prasad pi, kal tu langar khana hai." So I was kind of disappointed कि आज मुझे लंगर नहीं मिलेगा, but he said, "Tu kal tu langar khana hai, tu roz aaya kar, hai mera hukam hai." I started going every day. And I used to look forward to being with him every day. And in those days, I'm going back a while now, many years. He used to sit in Chota Mandir 7 days a week. And then, of course, he reduced it. He tapered it to 4 times a week. But I was privileged enough to be there 7 days a week. And then the changing season came around October. And while sitting with him, my asthma attack triggered. And I said, "Guruji, मुझे जाना है अस्पताल, मुझे steroid injections चाहिए." He said, "अगर तू ठीक होना है तो चुप करके लंगर कर." So I said, "Guruji, मुझे सांस नहीं आ रहा है." And I was crying. By that time, I was barely 31 or something. So I said, "Guruji, मुझे सांस नहीं आ रहा, मुझे जाना है." He said, "गुरु तो हुक्म नहीं टालेगा, अगर तू ठीक होना है, कल्याण कराना है, तो पूरा लंगर करना है." So I ate forcefully, of course, and, kind of resentfully. And then I bowed to him to take Agya. Mentally, I said, "I'm not coming here again." Verbally, he said, audibly, he said, "Kal aa jaye, kalyan kitta, ja aish kar. And hoon, asthma tera theek kitta, ja." So I said in my head again, I said, "I don't know what he's talking about, but I am not coming here and I'm going straight to hospital to get my steroids." The long to short is, I did not go to hospital. I never had steroid injections ever again after that one langar. So that one langar prasad was my medicine
to cure the asthma which I was born with. It was congenital. It was always life-threatening. I would, even as a child, I spent my first 10 years of my life in hospitals, in and out, quite severely, and routinely I would be hospitalized. So that was the first miracle of many miracles. But of course, the biggest miracle is me meeting him. So I do thank Bambi Singh Aunty today, because koi na koi, everyone's a conduit. Everyone is a kind of a medium to get us to divinity. So I feel really blessed. It was almost like bumping into Bambi, socially, but I was meant to meet her because God had planned it that way. He connects the dots. Then my beautiful journey, inner journey, started right away. As I said, there was a lot of inner turbulence in my life, inner also with my whole being, my soul, my body, my cells. I mean, I was in deep, deep distress in my life. But I noticed on coming to Guruji regularly, having the langar, imbibing the Shabad Gurbani, and one day I even got reprimanded by Guruji, like a schoolmaster does to a student, कि तू सुनदी नहीं गुरबानी, चंगी तरह सुनिया कर. So I said, Guruji, मुझे समझ नहीं आती है. Then कहते समझ नु किसने किया, सिर्फ सुनिया कर. The vibrations are healing us on the soul level. So then what happened? My inner journey of the calmness started happening. I said, outwardly, my skin was still very erupted. It was still very tender. My eyes were shut. If I smiled, my face would crack. So nothing external was changing. But internally, I noticed a sense of acceptance of what was. My marital home was crumbling. There was no relationship in the marriage. There was no relationship with myself. I was lost. I was a lost soul completely. And it's like the saying, God takes you from the dark to the light. He takes you from the unreal to the real. And he takes you from ignorance to wisdom. So I noticed that things were changing, transforming within. And then the following year, he calls me from the Sangat. He said, Adhara, मैं कहा, हाँ जी गुरुजी, कहते तू श्रद्धा में पास हो गई, तेनू नींबू दी तरह निचोड़े है, जा तेरा स्किन कैंसर ठीक किता. हूं तू बाथरूम दी बत्ती ना बंद किता कर, बाथरूम जान तो पहले आईने कोलों ना डरिया कर. So when he said bathroom की बत्ती ना बंद किता कर, बाथरूम जान तो पहले, I was in a state of complete astonishment. I thought, how does he know something so personal, something that my own kith and kin, my family, my children are not even aware of. So then I understood, oh my God, I'm being watched. Even at home, he is omniscient, he's omnipresent. And I had this feeling that Guruji knows everything. He knows more than what meets the eye. He is more than what meets the eye. And some kind of wisdom prevailed. And he said, tu हैरान क्यों हो रही है? सस्ते विज़रब मिल गया ना, तन्नू तो पता ही नहीं मैं कौन है. तो ना बैठ भी जाना, गल्ला भी कर लाना, तन्नू सस्ते विज़रब मिल गया. लेकिन रब दी कदर नहीं हुई, क्योंकि तुसी अपनी शॉपिंग लिस्ट लैंड दियो, तुसी ए मंग दियो, बच्चा मंगला दियो, नवी हस्बैंड चाहिए, नवा वाइफ चाहिए, मैनू नवा ये चाहिए, घर चाहिए, जॉब चाहिए, प्रमोशन चाहिए, all the worldly material desires that we have, we come and present them to our Lord, our Almighty, our Guruji. Not thinking कि ये चीजें तो वैसी आपको मिलनी है जब आप असली चीज मांग लेते हो. And these are Guruji's words, his वाणी. He said, Nita, कोई मेरे को असली चीज नहीं मांगता, जो मैं देना आया वो कोई नहीं मांगता. He said, I have come to uplift humanity. कहते अगे देखना बड़ा मारा टाइम आ रहा है, तो उन्हें पता ही नहीं अगे की है, जो तो सिर्फ दीवार तक नजर आता है, मैंने बहुत अगे नजर आ रहे हैं. कई चीजें बोली थी, पानी पानी नजर आ रहे हैं, which meant tsunamis and floods, I guess. Natural calamities होंगी. ये COVID, he did not spell out COVID, but he said एक दिन आएगा तुसी मैनू कार बैठ के याद करोगे. So all these things he had, kind of preordained or, pre-warned us against, cautioned us against. But of course उस दिन में नहीं समझ आता था गुरुजी क्या कह रहे हैं, और ना ही उन्होंने समझने दिया. कहते अगर मैं अपना असली रूप दिखा देंगे तो सीधे अपने वैसी घर गृहस्थी ही चढ़ के आ जाओगे, क्योंकि अगर रब अपना असली रूप दिखा देगा तो किसको अपने घर में रहना है. हम सब कहेंगे हम गुरुजी यही सेवा दे दो, यही अपने चरणों में बिठाए रखो.
पर कहते से घर गृहस्थी में रब मिलता है। अब जब हम अपनी वर्ल्डली ड्यूटीज करते हो, अपनी ऑब्लिगेशंस फुलफिल करते हो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कंप्लीट करते हो, उसी में रब है। पर करो अच्छे से, अच्छे कर्म करो, बुरे कर्म ना करो। तो यू ऑलवेज सेड मन होए चंगा ते नलके दा पानी भी गंगा। किसी अगर आप किसी का अच्छा नहीं कर सकते हो तो किसी का नुकसान भी ना करो। अच्छा बोल नहीं सकते तो किसी का बुरा भी मत बोलो। एक चुप 100 सुख, कई चीजें उन्होंने जो बेसिक है वो सिखाई है। One day I was doing Ninda to Guruji, and I have to tell you, of course, my skin cancer completely disappeared, and how? Only through his meher, his vibrations, langar, and Gurbani sun ke. So I got cured of my every illness, my every ailment, through the 3 pillars of faith which Guruji has given us: Satsang, Seva, Simran, and Gupta, Gupt Part, Gupt Seva. So then he said, Anita, tu पिछले साल एस्ट्रोलॉजी हो गई सी, तू बड़ा भटकी है, तू बड़े बाबाज and gurus and पंडित के पास जा चुकी है। तो I said, हाँ जी गुरुजी। I said very sheepishly, कहते तू एस्ट्रोलॉजी को गई सी पिछले साल? मैं कहा हाँ जी गुरुजी। फिर उन्हें की क्या सी? I said गुरुजी, he said उन्हें क्या ही सी ना कि तेरी कोई लाइफ नहीं दिसंबर 97 के बाद। तो उन्हें सही क्या सी, तेरी कोई लाइफ नहीं सी, पर मैं तेनू नवी जिंदगी देती हूँ। हुन दस कौन बड़ा, तेरा गुरु या तेरा एस्ट्रोलॉजर? So there again, he showed me that we don't need to go anywhere. When we come to Guruji, it has to be an absolute soul-to-soul, one-to-one connection with our Lord, with our Master, with our most benevolent and merciful Savior, who is Guruji. And we all have realized this, especially last year in COVID times, that whole year has deepened our connect. We could not go out, but we could go within. And he forced us, he compelled us to do that. He actually, Mother Nature has compelled us to see the deeper meaning of life. We were all living or sleepwalking through life. We were all living on the surface, didn't know what was happening. But we have learned so many things in the COVID times. Guruji ko kuch nahi humse chahiye, sirf hamara pyar chahiye. He is love. He wants our devotion and he wants our commitment. And that is all he looks for. He doesn't care about the decorations that we do for him. He doesn't care about the expensive clothes that we even, offer him on his gaddi. He doesn't see how much money we have spent. He sees our bhav. He sees our love, our devotion, dedication. He said, main toda bhav dikhna. It's like, you can't make a fool out of God. He had a great sense of humor, as many of us have heard also. Ek lady mujhe Guruji kone mein bithate the, so I used to hear the dialogues being exchanged between him and Sangat and whoever. And he said, Anita, एक लेडी आई 9 बजे शाम को, जब लंगर लगता था, लंगर के टाइम, तो मत्था टेक रही, तो गुरुजी कहते ए हुन खाना खाना ही है, कार चूल्हा नहीं चलाना सी। So and then the other thing was, एक लेडी आई फिर एक टाइम ते मत्था टेका, तो गुरुजी कहते कि ए देख 2 मिनट की मैनू ह्यूमिलिटी दिखा रही है, हुने तो सब नाल लड़ के आई है कारो। So we can't change the world, but we must make a commitment to ourselves to change ourselves with his grace. क्योंकि उनके इजाजत के बिना, उनकी एफर्ट के बिना एक पत्ता भी नहीं हो सकता। पर दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है, बिकॉज गुरुजी ने खुद ही कहा था कि तुसी अपना कनेक्शन बनाओ, कोई मीडिएटर्स नहीं, अपना सत्संग जरूर सुनाओ, अपनी मेहर सुनाओ, sing his glory, sing his glory for sure, and count his, grace, but don't try and give messages to people. Just do your satsang. Make it very focused. अपना मेहर सुनाओ बस, because वो मेहर में उनकी लहरें चलती है, उनकी मेहर में ही उनकी, जब हम मेहर गाते हैं तो उनकी लहरें चलती हैं, हम कोई नहीं है। Like you just said, Aunty के, आप जो गुरुजी गाइड करें, तो इट्स एक्चुअली लाइक दैट। जब हम मत्था टेकते हैं गुरुजी को, अपनी मात छोड़ते हैं और उनकी मात लेते हैं। मत्था टेकने का भी डीपर मीनिंग है कि हम कुछ नहीं है, हमें पता ही नहीं, क्योंकि गुरुजी हैज चोजन अस फॉर व्हाटएवर सेवा ही हैज गिवन अस। उन्होंने दिया है, इज्जत दी है, प्यार दी है, सेवा दी है, और वो सेवा जब भगवान देते हैं तो वो सेवा का फल भी बहुत अच्छा होता है, बिकॉज उन्होंने ये सेवा में दिया और हमने अपने से नहीं चूज किया। ये कहने से सुनन वाला और सुनान वाला दोनों तरफ मेरी
महर चलदी है, मेरी लहर चलदी है, लहर भी और महर भी। किसको ब्लेस कर रहे हैं सुनने से। मुझे याद है फिर मुझे डांट पड़ी, कोई किसी को बोला सत्संग ऐदा सुन फलाने दा, तो मैं बैठी, मैं सुन ही नहीं रही थी, मेरा दिमाग कहीं और चल रहा था, घूम रहा था। तो गुरुजी कहते चंगी तरह सुन, तू सुनदी नहीं, सुनन नाल तेरी ब्लेसिंग होएगी। तो इस करके कोई सत्संग कर रहे होए, और खासकर मैं कहवा कि सत्संग सुनो, तो ਤੁਹਾਡੀ महर है, ਤੁਹਾਡੀ कोई ब्लेसिंग हो रही है। आन अगर कैंसर का सत्संग सुना रहे हैं तो कैंसर हो सकता है वो आन वाला कैंसर ਤੁਹਾਡਾ पहले क्योर हो रहा है सत्संग सुनने नाल। गुरुजी ने कितना सिंप्लीफाई कर दिया रिलीजन को। तो ये देखो उनकी तरीका है कि महर करने का। हम सत्संग जब सुनते हैं तो पता नहीं कोई कोइंसिडेंस नहीं होता, ये उनकी चॉइस होती है। नथिंग इज बाय चांस, एवरीथिंग इज बाय हिज चॉइस। तो अगर हम कहीं सत्संग में बैठे हैं, किसी ने डायबिटीज का सुना दिया, तो हो सकता है हम अगर गौर से सुने, इम्बाइब करें, तो हो सकता है हमारे आने वाली डायबिटीज को भी गुरुजी ने इरेडिकेट कर दिया वो सत्संग सुनने से। तो इसलिए गुरुजी ने कहते थे ना, दो चीजें हैं, मैं थोड़ी वहम और अहम दूर करने आया। मंदिरा में सोनू रब नहीं मिलेगा, मन ही मंदिर, तन ही मंदिर, घर ही मंदिर, कमरा मंदिर, बड़ा मंदिर, 5 मंदिर गुरुजी हमारे लिए छोड़ के गए हैं। तो ये जो मंदिर है हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक हमारी एक जिम्मेवारी है कि हम इनको पवित्र रखें, घर को साफ रखो। गुरुजी हमेशा कहते थे कि हर चीज की अपनी जगह होती है, और मैं एक्चुअली मानती हूँ, कुछ भी हो मेरे घर में, क्योंकि तो ये यहाँ क्यों पड़ा है, गुरुजी हमेशा कहते थे हर चीज की अपनी जगह होती है। सिस्टमैटिकली, मेथोडिकली जियो, एक सिस्टम के साथ जियो, एक डिसिप्लिन के साथ जियो। कहते थे 1 घंटा वॉक करो, अगर लाइक अपना टाइम वेस्ट मत करो फोन्स पे, या गेम्स खेल के, या निंदा चुगली करके। वो खुद ही कहते थे कि अपना कंस्ट्रक्टिव टाइम रखो, चंगा काम करो। वो जगत कल्याण करने आए थे, तो हम भी जितनी सेवा कर सके। द बिगेस्ट सेवा भी कई रंग की होती है। सेवा सिर्फ यही नहीं होता अपने हाथों से आप क्या करते हो, मतलब बड़े मंदिर में या छोटे मंदिर में या किसी सत्संग में। सबसे बड़ी सेवा होती है आपकी गुरु के लिए अच्छा इंसान बनना। वो सबसे बड़ी सेवा है कि अपने आप को सुधारना इज द बिगेस्ट सेवा, एंड वो योर गुरु। तो गुरु जी के काबिल बनाओ, अपने आप को उनके प्यार के काबिल बनाओ। तो फर्स्ट सेवा इज टुवर्ड्स योर ओन सेल्फ, टू इम्प्रूव योर सेल्फ, टू बी अ बेटर ह्यूमन बीइंग, टू बी अ डिसेंट ह्यूमन बीइंग। देन to do other kinds of seva, to speak softly to others, to be kind to others, your generosity, give them your time. Your time is also your seva. If you're lonely, or if somebody is lonely in the sangat, just pick up the phone and say a few nice words, or go and have chai prashad with them. That's another seva. So choti choti cheezein Guruji ne सिखाई है कि सेवा सिर्फ मनी देने में नहीं होता है, अपना टाइम देना भी बहुत बड़ी सेवा है। So these little things are what count in our lives, and यही हमारे karmic account में जाएंगे। So these are little things, and then Guruji जाने वाले 2007 में, the long to short is, गुरुजी कहते एक बार मुझे खड़े होके कहते तू सुना सबनों खड़े होके कि तेरा किस्सा मैं कैंसर ठीक किया, अस्थमा ठीक किया। मैं घबरा गई, मैंने कभी पब्लिक स्पीकिंग नहीं की थी। मैं कहा गुरुजी मैं नहीं सुना सकती। कहते सुना ना, मेरी मेहर है। मैं खड़ी हो गई, मैंने कहा गुरुजी ने मुझे स्किन कैंसर अस्थमा ठीक कर दिया। बैठ गई मैं। जय गुरुजी उन दिनों में कोई नहीं बोलता था, तो मैं बैठ गई चुप करके। गुरुजी हंसने लगे, कहते कम नहीं है तो सत्संग में नहीं करना आता। मैं कहा गुरुजी आगे से मत कराना कभी। तो हंसने लगे फिर से, कम नहीं है। And then when he was leaving his body 1 week before I met him, 2007 Thursday, and then he says कि नीता खड़े he said Anita तेरी सेवा है हुन। And he knew I wouldn't meet him after that. 1 week before he left his physical being, it was a Thursday, I remember I met him, and he said दो चीजें बोली, कहते थर्सडे तेरा दिन है और तू sorry, there was a phone call. He said थर्सडे तेरा दिन है और तू जरा चंगा काम करना है ना तो तू थर्सडे कितना कर। दूसरा तेरी सेवा है सत्संग कितना कर, शेयर कितना कर, संगत जोड़ और सत्संग कितना कर। बड़ा हमारा टाइम आ रहा है आगे। ऐसे गुरुजी आपने तो बोला है कि मुझे सत्संग नहीं करना आता। तो कहते कमली हुन मैं करांगा, मेरी मेहर है। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਮਿਹਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਕਲਿਆਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ और सुनने वाला का भी कल्याण होता है। जो भी आप काम करते हो वो गुरु जी का नाम लेके
गुरुजी को दिल में बसा के, तो वो उसका रस ही अलग है। दूसरा कहते थे सत्संग आओ, तो 4 दिन ते लोग मेरे को लांदे ने सुंगा डूंगा चुंगा उंगा, आपने सुना भी होगा वो शब्द। तो कहते आप बनो डूंगा और उंगा, जो सब कुछ छोड़ के वो मतलब उस पे you listen to the shabad and you don't only listen to it but you apply it into your life. You start practicing it. अगर बोला है पाप ना कर बंदिया, जो हम सुनते रहते हैं, या श्वासा दी माला ना सिमरा तेरा नाम, तो actually start applying it, start internalizing it. And that's what he's taught us to do, to be reflective and introspective. It is very important to really learn the lesson of the Gurbani. It is so beautiful because वो भी रस वो ही देते हैं। कहते नीता बड़े लोग ही मेरे को लांदे ने, पर रस कोई नहीं लांदा, अलग अलग तरीके है। कोई सुंदा रहता है, सूट तो पहले भी पाया सी, फिर आ गई है पा के, देखो कपड़े नहीं गए, यहाँ कि ये तो कंघी भी नहीं करके आती, या जैसे 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 ह्यूमन नेचर। लेकिन आंख खोल के बैठेंगे तो हम जज करेंगे। तो इसलिए उन दिनों में गुरुजी इतने डिसिप्लिन थे, कहते अख बंद करके बैठे थे। तो आंख बंद करके हम बैठते हैं तो हमारी सोल खुलती है। When we close our eyes, the soul, the being, everything opens up within us. So it's very important to remember him and to see him in our heart. In the end, Guruji कहते मैं तुम्हारे अंदर दे गुरु ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ आया. So it's not about an external journey. It is all about the internal journey. He said, Anita, असली चीज मंगला है। ਜਦੋਂ असली चीज मंगलेंगी ना, तो देखी फिर कितना तेनू आनंद आएगा, क्योंकि बाकी तो सब कुछ ऐसे ही रह जाना है ना। एंजॉय सब कुछ करो, अपना कपड़े अच्छे पहनो, जो हम ब्लेसिंग है हमारी, जेवर है, घर है, ट्रैवल है, अच्छी अच्छी गाड़ियों में बैठ रहे हो, स्टाइल है, स्टाइलिश बन के रहो। तो सब कुछ मतलब जो गुरुजी ने बोला है, स्टाइलिश बन का ये नहीं कि ओवर ड्रेस रहो, मतलब कि क्रिसमस ट्री बन के बैठ जाओ, बट जस्ट बी एलिगेंट, बी ग्रेसफुल। तो कहते कर आप सॉरी मुझे एक सेकंड, सॉरी वो लहर Ovaries, Aunty. पानी पिलाएगी बेटा, और कोसा पानी बेटा, सॉरी। सो लहरें चल रही है। So he said, what he's taught us, to just condense it, is he's taught us to be very much part of the material physical world, but not to forget the karmic world, the karmic journey. So it is actually being able to strike a balance between the two. Because we are physical beings, we are like material beings. And we are born in a material world. So it's important to follow our material pursuits, our ambitions, our aspirations, because jab tak wo nahi karenge, to we will not feel restful either. There will always be a void in our lives. कि मैं बचपन से मेरा ड्रीम था राइटर बनने का, लेकिन मैं बनी नहीं, तो वो रेस्टलेसनेस हमेशा रहेगा। तो वो भी गुरुजी फुलफिल कर देते हैं। And when he fulfills that, then you know that, okay, now it's important to elevate ourselves to a higher level. वो अपने आप अंदर से आता है. Then we want, okay, now we should be on our spiritual journey, because that is what actually makes sense in this world. And then we strike a balance between the material. He enables us, he teaches us to enjoy the material world, and he enables us to live our karmic journey, so which is very important. So, like he said, kabhi kisi ka nuksan na karo. And even knowingly or unknowingly, see, money is a very sensitive, it's an energy. Money is energy. If I take some money from somebody, which is not really my right to take, which doesn't belong to me, then I am putting a burden on myself karmically, because I have taken something, an energy, which is not really rightfully mine. So be careful. Like Guruji always used to say, "Jaan hoye pyar, wana karo vyapar." So he used to also discourage people in Sangha doing businesses with each other, because money is it's an energy. And sometimes वो भारी पड़ जाती है हम पे, because जो हम गलत करते हैं वो हमारे बच्चे suffer करते हैं. Like they say even in the Bible, the sins of the father fall on the son, and the sins of the mother
fall on the children, on their daughters. So watch yourselves, because हम जो करेंगे वो फल पाएंगे. जो मैं किया सो मैं पाया. So इसलिए don't blame the world. Only take responsibility for your own actions. Guruji has taught us this, to take complete responsibility for every thought, negative action, negative deed. Because we are the co-creators, the co-doers. He's the main doer. He's the father of the universe. He is the, benevolent savior. But we are the co-creators. Guruji gives us free will. The choices are ours, what we do. भगवान ने हमें एक स्क्रिप्ट लिख दी है. Now it's up to us how we enact it. अगर हम गुरुजी को प्रायोरिटी बनाएंगे और टॉप प्रायोरिटी बनाएंगे, उनके रंग में बस जाएंगे, समा जाएंगे उनके रंग में, फिर गुरुजी हमारा दुनिया बढ़ा देते. He expands our world. But if we do things selfishly, सेवा भी कर रहे हैं दिखावे की, अगर मैं सत्संग कर रही हूँ, मैं अपनी ग्लोरी के लिए कर रही हूँ, और I'm doing for my fame or my glory, he knows my intent, I will not get blessed. But if I'm doing it because I genuinely want from my heart कि लोग जुड़े, for me, I have seen those days, and I'm sure many of us have, when Sangat was a handful. And जब गुरुजी ने कहा तो हैरान हो जाएंगे. When I cried in front of them once, I said, गुरुजी मेरी family, मेरे friends सब मेरा मजाक उड़ाते हैं कि मैं आपके पास आती हूँ. कहने अच्छा, ते फिर मैंने कहा गुरुजी लेकिन I feel bad. I'm ostracized. I'm most misunderstood, and I am also discounted from family gatherings. He said, "Koi gal nahi, tu rona." And I was crying like a child cries to a father. So he said, "Tu rona, tu ghabrana, tu हैरान होंदी जाएंगी. एक दिन तेरा एक बंदा आएगा." And संगत any बज जानी है, बड़े मंदिर लाइना लग जानी है देखी. तो I said, "Guruji, ऐसा नहीं हो सकता." Like he said, देखी एक दिन आएगा, जगह जगह मेरी जोत जलेगी और तेरी सेवा है. You will travel across every continent, country, city in the world, and you will do satsangs. And I didn't believe him, because I said, Guruji, एक तरफ तो मेरा divorce हो रहा है. How will I be able to afford to travel the world? How will I be monetarily fulfilled? I have not earned a penny in my life. जो है उनकी मेहर है. I am not a businesswoman. I'm an artist who probably draws Guruji sketches or does some flowers for myself. I'm never, besides doing calligraphy classes, which of course don't even pay for my coffee in Starbucks. The point is, I am not of that mindset where God has given me a lot of talents to write books and to write, do calligraphy, to be a good teacher. But I've never been able to earn a penny in my life. That's my karmic thing. But having said that, like I remember the first time, just a small satsang. I don't know what time it is. I hope I'm not over talking. No, Aunty, not at all. It's a cute satsang. So when I was newly separated, I had seen 50 apartments without exaggeration. And every evening I would come to Guruji. This was in 2006. And my search started around July, after his birthday, July 7th, of finding an apartment on Guruji's hukam, कि बड़ा वधिया apartment love, और उथे satsang होया करेगा. So every day I got this amazing broker. He became a friend, very nice guy. God bless him. He had so much patience because das dikhata tha din mein, and I would not like any of them. But evening mein aati thagi Guruji ke paas, really exhausted. I said, Guruji कहते फिर नहीं पसंद आया कुछ. मैं कहा नहीं गुरुजी कुछ नहीं पसंद आया. And I would be so disappointed. He said कोई गल नहीं, चाय प्रसाद पी, लंगर खा. And the whole month went by. I probably had seen 50. In the end, गुरुजी कहते पंचशील विच देख के आ. मैंने कहा गुरुजी पंचशील तो मेरा बजट में नहीं है, वो बहुत एक्सपेंसिव. मेरे फादर ने certain amount of budget दी है. So he said नहीं तो देख के आ. I went. It was a brand new apartment. And there was a corner plot, beautiful it was, 550 square yard, huge and very open, lots of sunlight. So I said, I came in the evening, and the fair pasand aaya, because he'd seen it in his divine vision.
ऐसे पसंद तो आए गुरुजी, लेकिन मैं उसके काबिल नहीं हूँ. And you know, it's 3 times more of what my father has given. And I'm from that old school where my father obviously has taken care of his sons, and you know, the daughters are always like whatever. And I said, Guruji, वो तो दे ही रहे हैं ना, पर वो बजट में दे रहे हैं. तो he said, नहीं नहीं, मैं बैठा, तू बाहर जाके फोन कर अपने पियो नू ते कह दे कि मैं एयू लेना है, ते ए ओदी वैल्यू है. मैंने डर डर के, because daughters, you know, I said, how can I ask? And this is 3 times more. मैं डर डर के काम के बाहर गई, छोटे मंदिर से, मतलब दरवाजे के बाहर. And I said, Dad, ये अपार्टमेंट देखे हैं, मेरे गुरुजी कह रहे हैं, कहते मैं 1 मिनट तेनू फोन करना, चारों तेरे भाइयों से बात करके, my 4 brothers I have, 4 brothers की बात करके फिर मैं आना तेरे को वापस. 2 मिनट में फोन भी आ गया. कहते कुछ नहीं है, उन्होंने कन्वर्ट किया होगा पाउंड्स में, यू नो, बिकॉज़ इज फ्रॉम इंग्लैंड. तो उन्होंने कहा ले तो कुछ नहीं है, अच्छा लल्ला है. मैं अंदर आ रही हूँ गुरुजी के पास, छोटे मंदिर में मैं आ रही हूँ, तो गुरुजी हंस रहे हैं, कहते फिर प्यो ने हाँ करती है, अगला तेनू बसंत विहार लेके देवांगा. सो आई सेड, गुरुजी मैं 5 किलो अफोर्ड नहीं कर सकती, आप बसंत विहार की बात कर रहे हो. कहते जुगाड़ करांगा. एंड जुगाड़ किया उन्होंने. एंड दैट इज हिज मेहर. जब गुरुजी ने बोल दिया उनके हुक्म में रहो, उनके हुक्म में रहने से I am, as I said, I am incapable of earning my own bread and butter. I've never done it. That's not how I was raised. I was raised being dependent on my father, then my husband, and now I'm dependent on Guruji alone. And he takes care of my finances. He lays out the platter for me. He gives me everything that I need and want. I don't know how it comes, when it comes. Even today it happened. Yesterday I had a thought, and it's just it's amazing. कहते ना असली, कहते असली चीज मांग लो, चंगी चीज मांग लो, वो भी रब देता है, पर असली चीज और चंगी चीज को मांगता ही नहीं, हम छोटी छोटी चीजें. So yesterday I was thinking, I really want this like a Lucknowi suit. I don't have yellow in my wardrobe. And one Sangat walks in today with Chai Prashad with me, and she brings a yellow suit. I mean, what are the chances? So this is how Guruji fulfills our every desires, and he loves us. But we also have a responsibility to love him back the way we are meant to love God, unconditionally, because he loves us unconditionally and he keeps pampering us. So be on the right path, do the right thing, say the right thing. Kisi ki baaton mein na ho, kuch galat nahi karo. If you don't feel good about something in your heart, when somebody says something, then just sit with him. Sit with him and say, Guruji, aap mujhe sign do, ya aap mujhe indication do, ye mujhe karna chahiye, left jaun ya right jaun. Because he is our guiding force. He is our driving force. He's driving the vehicle of my life. He said, मैं तेरे हत्था दे लकीरा बदलते हैं, तेरे मत्थे दा लकीरा, तेरे स्टार्स बदलते ने, कौन कर सकता है? तो ऐसे करके इधर उधर ना जाओ, ना किसी दी गल्ला चाहो. He even said, संगत इतनी बच जानी है, बड़ी confusion भी होनी है, because हर इंसान, हर संगत, आप सोचो, फैमिली में मिसअंडरस्टैंडिंग्स नहीं होती है. हर 5 उंगलियां सेम तो नहीं हो सकती ना, पर 5 उंगलियां का अलग काम है. कोई गलत नहीं है, मेरी छोटी उंगली गलत नहीं है, उसका अलग काम है, इसका अलग है, इसका अलग है. So everyone is right in their own perspective. But आप अपना, जैसे आप हो, आपकी नेचर है, आपकी पर्सनालिटी, आपकी कैरेक्टर है, उस हिसाब से आप कनेक्ट करो अपने गुरु से. तो क्योंकि आपका कनेक्शन जो होगा सोल टू सोल इंडिविजुअली होगा, इसलिए कहते हैं अपना कनेक्शन बनाओ. क्योंकि जितनी संगत, जितनी कहते हैं ना, जितनी मूतनी बातें, so that is inevitable. Families में भी conflicts होते हैं, conflict of interest या differences of opinion. So it's very important to maintain your own direct connection. किसी के लिए mediator ना बनने की कोशिश करो, authoritative ना बनने की कोशिश करो. गुरुजी ने कोई वहम नहीं थे, कोई अहम नहीं था, कोई do's and don'ts नहीं है, कभी भी नहीं बोला renounce कर दो मीट को या नॉन वेज को, या ड्रिंक नहीं करनी है या फलाना नहीं करना है, कुछ नहीं बोला. It's all about moderation. The key to happiness is moderation. It's all about the middle path. It's all about being happy and giving happiness to others. Be kind to every kind. Don't judge anyone. Be very compassionate and humble. बड़ों की सेवा करो.
That is your first and foremost duty. He said, जो माँ बाप की सेवा नहीं कर सकते वैसे ही रब को दूर हो जाता है. पहले अपने माँ पियो का ध्यान रखो, उन्होंने प्यार करो, क्योंकि वो रब के समान है. और गुरुजी सब कुछ देख रहे हैं. बिलीव यू मी, गुरुजी रब को खिलौना जाना आजकल, क्योंकि गुरुजी के नाम पे कहीं कुछ हो रहा है, लेकिन वो जरूरी नहीं है कि आप उसको इम्बाइब करो. जितना हम इम्बाइब करेंगे हम पागल हो जाएंगे. तो इम्बाइब नहीं करो, बात छो. जूती दिनार के अंदर ना छो. तो क्योंकि मैंने एकदम एक बार निंदा की किसी की गुरुजी के साथ, मैं आगे गुरुजी, मैं क्या गुरुजी वो ऐसा ही है. तो कहते सानू की, जब बोला सानू की, उसके बाद मैंने हाथ जोड़े. मैंने कहा 2 मिनट की, ऑफ कोर्स आज भी इम्पैक्ट होती है. कोई मुझे कुछ कहता है ये फलाना ये संगत ऐसे कर रही है या वो संगत ऐसे करे, 2 मिनट का मुझे इम्पैक्ट होता है. ह्यूमन, बट आई ट्राई नॉट टू ऑब्जर्व इट. आई लिसन एंड देन आई से गुरुजी आप देखो. सो क्योंकि हम कोई नहीं होते हैं किसी को जज करने, हमें पता नहीं किसकी अगली की क्या जर्नी है एक्चुअली में. सो वो भी कहोगे गुरुजी सबकी बुद्धि अच्छी रखो, सर्वत्र भला, और सबकी बुद्धि अच्छी रखना. सभी सचमुच आपसे दिल और जान से प्यार करें, आपके नाम को बदनाम ना करें. और डोंट लेट एनीवन यूज हिज नेम इन वेन फॉर देयर पर्सनल और मॉनेटरी गेन्स. यू नो कि मेरे सपने में आए हैं आप गुरुजी, कह रहे हैं कि गुरुजी कहते तुसी 10,000 दे दोगे तो ਤੁਹਾਡਾ कल्याण होएगा. ऐसी बातें अवॉइडेबल है. बिकॉज अगर आपके ड्रीम में आए तो मेरे ड्रीम में भी आ जाएंगे बताने के लिए कि नीता आंटी आपने देना है. अगर आपने लेना है तो मैंने देना है, तो वो मुझे इंडिकेशन दे देंगे. तो ये बातों में नहीं आना, स्ट्रेस नहीं लेना. वी आर टू ब्लेस्ड टू बी स्ट्रेस्ड. सीधा सीधा सिंप्लिसिटी में रहो, स्पिरिचुअलिटी में रहो. यू नो रिलीजन तो गुरुजी ने दीवारें तोड़ दी रिलीजन की, बिकॉज वो प्रैक्टिकल है. लाइक ही यूज्ड टू से मैं तो प्रैक्टिकल दिखाना है कि रब है. तो ये आप जो उनकी टीचिंग्स है, जो उनकी वैल्यूज हैं गुरुजी के, उसको सचमुच इम्बाइब करो, उनके हुक्म में रहो, और फिर सब कुछ ही हेवन ऑन अर्थ है. यही उन्होंने हेवन दिखा दिया हमें, यही हमारा सतयुग दिखा दिया हमें. तो कलयुग होगा दुनिया के लिए, हमारे लिए तो सतयुग है कि हम रोज ही सत्संग कर रहे हैं, रोज बैठते हैं मंदिर में, रोज गुरुजी के पास जाते हैं, या घर में भी बैठते हैं. मेरे तो बिल्डिंग में ही मंदिर बना दिया है. So it's so beautiful. So after he left his body, of course, the journey was not smooth. I will cut it short because actually physical satsang hai niche. So, lekin I had cancer, breast cancer 3 times. But I can tell you honestly, it was tough because I had 30 radiations, and I did become weak, and my immunity was compromised. But he distracted me with the sangat. Koi coffee leke ja raha hai, koi dinner ke leke ja raha hai. It was so beautiful, that journey. That वो karmic जो journey थी वो तो काटनी पड़ी, but side by side he would entertain me every day. So he sends people in your life, संगत, in a particular phase. वो भी लेन देन कुछ होता है, पूरा लेन देन का खेल है ये हमारा. So काट लो अच्छे से. मैंने एक बार गुरुजी को बोला, गुरुजी लाइफ का मीनिंग क्या है, क्या अर्थ है जिंदगी का. कहते कुछ नहीं, टाइम पास है, हंस खेल लो, चंगे कर्म करो, मारे कर्म ना करना. So such a simple answer to a complicated thing called life. But ये life जो है बहुत सुंदर है. अगर आपको गुरुजी को दिल और जान से जितना प्यार करोगे, ये भी practice makes progress. इसमें भी practice ही होती है. अपने आप को discipline करो कि मैंने शिव पुराण पढ़नी है थोड़ी सी, मैंने वो मंत्र जाप करना है, and करते करते रोज वो एक आदत सी पड़ जाती है. We're all creatures of habit. फिर हमें रस आने लग जाता है. पहले तो habit होती है, एफर्ट होती है rather, कि अब मैंने करना है क्योंकि मुझे बोला गया करने के लिए मंत्र जाप. लेकिन फिर अपने आप अंदर से आता है कि वो जब तक करेंगे नहीं वो रस नहीं आएगा, तब तक वैसे नहीं लगता कि हमारी एपेटाइट अभी कंप्लीट हुई है. So we have an insatiable appetite for Guruji. It's actually insatiable. Wherever we sit with Sangat, Satsang start ho jata hai. So our whole breath is his. Swasani malana simra tera naam, rakhi channa dekho. This should be our prayer, because bhakti mein shakti hai. The rest is a mirage. The whole world is an illusion. Nothing is real and nothing is lasting. Everything is transient. Even our own journey is transient. We are walking through this beautiful world to go somewhere else. So let's enjoy the tour. Let's enjoy this visit on this incarnation, and let's count our blessings.
When we count our blessings and we stay in a mode of Shukrana, then that multiplies. Jai Guruji. Thank you so much, Auntie. You've made it us feel that Guruji is love, and we are flying in that secret sky, where every minute is like bliss, and we are taking the next step without even putting our feet on the ground. And you so beautifully said that every minute is satsang. So what I'm made to think is that every breath has become a satsang, no matter we are sitting cross-legged, we are sitting in a particular posture, we're doing dishes, we're doing every minute, every chore of the life, and yet it's a beautiful, blissful sangat with Guruji Maharaj and his beautiful satsang. So beautifully put. And last but not the least, he said Thursday is going to be your day, and today is the Thursday. So like, wow, this is like, in his world, no coincidences. No He has, coincidence. yes. And as he makes me say, he's the boss, it is his show. So we are just in bliss and so lucky to have you. And Thank we you. So lucky request to you be here. to, yes, I know you're busy today, but we would request you to come again and share more Yes. whenever time permits and Yeah, he sure. allows and is Next open. Thursday. Sure, Auntie, we'll figure out. And thank you so much. Thank Thank you. you so much. Thank you. Jai Guruji. Thank you. Jai Guruji. We'll Thank we'll you. play the Shabad for Agya Sangatji, and then we'll take Agya. Shukrana Guruji Maharaj. तोहि मोहि तोहि अंतर कैसा अंतर कैसा तोहि मोहि तोहि अंतर कैसा अंतर कैसा कनक कटक जल तरंग जैसा जल तरंग जैसा कनक कटक जल तरंग जैसा जल तरंग जैसा तो ही मोही तो ही अंतर कैसा अंतर कैसा जो पहमना पाप करता है अनंता जो पहमना पाप करता है अनंता पतित पावन कैसे हुनता कैसे हुनता कनक कटक जल तरंग जैसा जल तरंग जैसा कनक कटक जल तरंग जैसा जल तरंग जैसा तो ही मोही तो ही अंतर कैसा अंतर कैसा तो ही मोही तो ही अंतर कैसा अंतर कैसा जय गुरु जी संगत जी, थोड़ी देर में मंत्र जाप शुरू होने वाला है, तो अब हम शब्द प्ले करेंगे। तो जिन संगत जी को काम पर जाना है या कहीं पे जाना है, वो अपने अपने आप गुरु जी की आज्ञा से आज्ञा ले सकते हैं। शब्द विल बी प्लेइंग एंड बिफोर वी कंटिन्यू विद दैट, अगर किसी का भी बर्थडे है या फैमिली में बर्थडे है, तो मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। मे गुरु जी महाराज ब्लेस यू
थैंक यू सो मच, क्योंकि संगत में गुरु जी हैं. सो थैंक यू टू ईच वन ऑफ यू फॉर बीइंग हियर. शुक्राना आप सबके चरणों में हमारा सर, बिकॉज सब गोविंद है. So over to you, Subodhji, for playing Shabads, and after that we'll have the regular mantra jap as it's played on this platform. So Shukrana, Guruji. अंतर्जामी तुम जो लायक आछो अंतर्जामी प्रभ ते जन जानी जय जन ते स्वामी कनक कटक जल तरंग जैसा जल तरंग जैसा कनक कटक जल तरंग जैसा जल तरंग